Hello all. Very good evening. So, for those who don't know, my name is Karandeep Singh, and I teach anthropology at LevelUp IAS and some part of Indian society. Okay, so I've been given the responsibility to discuss that how you should be planning your next 15 months if you're planning for 2027 attempt, and how you should be coordinating your GS and optional preparation together. Okay. So before I begin this, I just want to tell you that UPSC as an exam is not about studying more. Most of the people, they understand UPSC as something if you read more, if you spend more time in reading, spending like 15 hours a day, and that means your success is guaranteed. No, UPSC is not about studying more. It is more about studying in the right order. Sequence is more important than the quantity that you are studying. Okay, so it's not only the volumes that you will be reading will be important, but in what order you study, that will be more important. And that's why I would say that UPSC is not an exam of knowledge or information. It is an exam of discipline, it is an exam of consistency, and it is more an exam of revision. And for this, I would like to tell you that strategy, the planning that you do, the steps that you take in your journey, if you're planning for 2027, that will decide your chances of success rather than simply reading or studying the book. Now, most of the people, as I can tell you, those who are beginning the UPSC journey, they might decide to start their GS and optional together. And that is where the first mistake happens. Most of the people, they fail because they start GS and optional together. Okay, so that's where my first suggestion for you in the coming next month is that start with GS first. Okay, so why I'm telling that ki GS is most important part, and why you should not start with both GS and optional together? Reason: the first thing that GS will give you, it will give you a exposure, a gradual exposure to the subject or to what you are supposed to understand in the UPSC. Most of the people are coming from engineering background, science background. They were not aware to the day-to-day things that are happening around them, national, international, economic level पे कुछ भी नहीं पता. And altogether they decided कि कोई movie देखी, कुछ देखा, कोई reason था, and they decided to prepare for UPSC. And then they joined a coaching, and the coaching says that you start with GS and optional together, finish your optional in 5-6 months, revise it 2 times, 3 times, and you decided that the energy level is so high that you decide to pursue both of them together. Never ever do this. Okay, starting with the GS, it will give you a gradual exposure. Plus, at the same time, it will prevent a burnout. Okay, आप अपनी एनर्जी एक साथ मत लगाओ. Okay, initially go for a gradual understanding what UPSC is demanding, what are the things that we need to understand, and then you should not be putting excessive energy all of a sudden. ठीक है, धीरे 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 अपने आप को एक्सपोज करते हैं, so that it's a test match. Understand, it's not a 2020. You have to be energetic, you have to be active for a very long period of time, and that's why start with GS. Okay, then the GS will also give you some context, the background of what you will be reading in your optional. Without this context, without this background, without some understanding, optional will not make any sense to you. Specifically, if you're choosing any humanities optional, and which is largely what the people do, that is anthro, socio, psychology, or PSIR, or PubAd, or whatever it is, or history. So, in most of the cases, what actually happens that people, they do not have the background. आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको सोशियो या एंथ्रो की ओरिजिन का कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा. Okay, it will not make any sense because you don't have the understanding of the world history, and a lot of ideas and all that will not make any sense to you if you do not have a basic general knowledge. Okay, आप ऐसा नहीं है कि आपने जनरल नॉलेज की बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपने स्कूल लेवल पे कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा, but the level that is required in GS, sorry, in UPSC will not be enough, or say will not be something that can be done only by your school studies. You need some kind of background that will be coming only when you study GS for civil services. So that will give you a context, that will give you a background, and that will prepare you for a depth or deeper understanding that you will be
when you will be exposed to the same content in your optional. Okay. Third, it will also help you build some kind of vocabulary. Okay, administrative vocabulary, some deeper vocabulary that जहाँ पे ऑप्शन में हम उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे. We will not go by in a very scratch or from the scratch. We expect the student to have a basic vocabulary, a basic say level of articulation to study or to start with the option. You cannot go with a एकदम novice की तरह जा रहे हो and you can start with your option. अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इन सब बैकग्राउंड के बगैर जा रहे हो तो व्हाट माइट हैपन दैट यू माइट स्टार्ट जीएस एंड ऑप्शन टुगेदर, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यू माइट फील दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड इन बोथ. आपका जीएस भी टाइम पे नहीं चल रहा, आपका ऑप्शन भी टाइम पे नहीं चल रहा. एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड that you should begin with GS, and that will give you a flow, that will give you a routine, and that will give you a basic foundation. Okay. And in the first phase, along with GS, what you should do with respect to optional. देखो एक ये फेज में वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन कि इस फेज में अगर आप जीएस से शुरू करते हो तो आपको ऑप्शनल चॉइस करने में भी थोड़ा हेल्प करेगा. ओके, यू माइट एक्सप्लोर सम ऑफ द इंटरेस्ट दैट यू माइट हैव कि मेरे को ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, इससे रिलेटेड कोई ऑप्शनल है तो आई कैन एक्सप्लोर मोर ऑन दिस. So it might also help you understand, identify your interest, your likes and dislikes, and based on that you can even choose your option. Other than that, जब आपने optional choose कर लिया है तो what you should be doing, at least make yourself familiar with the syllabus of your optional. Without diving deep into it, आप optional को detail में तैयारी नहीं कर रहे हो, but just इस phase में prepare yourself or just expose yourself to the syllabus of the optional that you will be reading कि क्या क्या topics हैं, उससे थोड़ा थोड़ा लिंक करो कि अच्छा ये टॉपिक जीएस में यहाँ पढ़ा जा सकता है, ये जगह पे ओवरलैप हो रहा है. तो इससे एक फायदा होता है कि आपकी सीलो प्रिपरेशन जो होती है ना, जो बेसिकली कंस्ट्रेंट है कि ये जीएस का पार्ट है, ये ऑप्शन का पार्ट है, नहीं. इफ यू आर एबल टू लोकेट दैट कि दीज आर द थिंग्स दैट आई एम सपोज टू रीड इन ऑप्शनल आल्सो, you might actually emphasize more on it. You might actually try to explore some other aspects of it, so that when you will be reading that thing in the optional, you will already have a greater understanding, or you will already have some kind of exposure to the topic that you will be overlapping with the optional. Okay, so that is the first phase. Okay, never ever start GS and optional together. Kabhi bhi mat karna. Okay, now let's talk about the second thing that we can do. That is a plan that what you should be अगर 15 महीने का टारगेट है, से 2027 प्रीलिम्स तक, so how you should be dividing the time in 3 major phases, and how you should be devoting that time to your GS and your option. So in the first phase, that is first to 4 months or say first 3 months, you should be giving 100% of the time to the GS. Thoda slowly, gradually, you should be covering topics after topics, and that should be the first thing that you should be doing. And in this phase, as I told you, that ki optional ke syllabus se familiar ho jao. Okay, rather than going deeper into the topics, first 3 to 4 months, you should be giving 95% of your time to GS only. Okay, just be familiar, develop some kind of flow, just develop some kind of understanding. ठीक है. And then जब एक flow में आ गए हो, you are basically working at a peak level. At this point of time, you can actually move towards the option. Okay, that is the second phase. So the next 6 months, like say 5 to 10 months, or say you should be going towards your optional and GS. अब इसमें क्या करना है, that 50% of your time should be given to GS and 50% of your time should go with optional. Now it can be both way. If you're going for self study, तो भी उसमें 50-50% टाइम डिवाइड करना है. सुबह का पहला हाफ, मे बी लंच से पहला वाला हाफ, you can go to GS, and the second half, maybe in the evening, you can go give it to optional. Okay, or maybe if you're doing the classes also, so you will have 2 classes a day. Say one class for GS, 2.5 hours or 3 hours, and then correspondingly 2.5 hours for self study in GS, and simultaneously one class for your optional, and then some time for self study for that option. 50-50% time should be given to your option. Okay,
अब इस फेज में what you should be doing is not just reading the GS and the optional, you should begin with your answer writing. I'll cover this point later, but answer writing is very important. So begin with your answer writing, don't postpone it too much. And then comes the third phase. Okay, now the third phase is the one जिसमें आप most probably पहले 10 महीने में GS खत्म कर चुके होगे. Okay, and then the third phase is the one where you should be orienting yourself for consolidation. आप मेंस के लिए कंसोलिडेट कर रहे हो और यू आर बेसिकली गोइंग फॉर अ रिविजन बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल अटेम्प्ट. ओके, एट द सेम टाइम आपको ऑप्शनल भी इन 6 महीने में खत्म हो जाएगा सेकेंड फेज में. एंड दैट्स व्हेन यू शुड बी गिविंग time for revision or consolidation of your option. And in this case, 60% of your time should go for your GS and 40% of your time should go for your optional. Okay, so that should be a rough estimate of the 3 phases that you should follow. कि पहले 4 महीने में I should be going for GS only. Okay, just develop some flow. Then the next 6 months I can combine with both GS and optional. And the remaining 3-4 months I can be going for say 60% of the time to GS and remaining 40% of the time for your optional, and that too for consolidation and revision. Okay, so these are the 3 major phases that should be coming into your preparation strategy in the next 15 months. Then the third thing that you should keep in mind is avoiding the collection trap. Okay, so that I highlight कि ये normal चीज आपको याद रखना कि you are here to become a district collector and you should not become a content collector. Okay, कि that you start buying a lot of books, you start say reading multiple toppers notes and all such kind of things. You should be avoiding this at any cost. And what you should be doing, remember that too many books, too many coaching material or PDFs or videos, these are the biggest trap. And the third major trap that you will all face is like making elaborate notes without clarity. आप नोट्स पे नोट बनाए जा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके पेज भर के नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हो, एक मोटा पोथा बन गया, 10 पोथे बन गए, एंड उसके बाद समझ में आ रहा है कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, आपको कोई और नोट्स मिल रहे हैं, एंड देन यू फील लाइक कि अरे यार फिर से नोट्स बनाना पड़ेगा. तो आप साइकिल बर साइकिल नोट्स पे नोट्स बनाते जा रहे हो. रीजन, क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो आपका इंटेंशन नोट मेकिंग की तरफ ज्यादा है रादर देन अंडरस्टैंडिंग. सो रिमेंबर, when you basically are starting a topic, what is more important is clarity. Just develop clarity over the topic, and then with the clarity, what you need to do is develop an understanding or clarity. Check the scope of that particular topic with respect to PYQ. कि जो पूछा गया है उस क्लैरिटी से क्या मैं वो सारे सवाल को समझ के एड्रेस कर पा रहा हूं. एंड देन इफ दिस इज ओके, मेक योर नोट्स एंड देन एक्सपैंड अकॉर्डिंगली. ये आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, एक नोट्स बना लिए. आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू आर गेटिंग सम न्यू पॉइंट्स, सम न्यू कंटेंट ओवर रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, you can just add 1 or 2 pointers. Okay, but simply किसी टॉपर के नोट्स पढ़े आपने, उसको बस एज इट इज कॉपी कर दिया अपने नोटबुक में या उसी को पेज फाड़ के लगा दिया. अब आपको जैसे ही कोई नए नोट्स मिलेंगे एंड देन यू फील लाइक कि आपको एक क्राइसिस आ जाती है कि अरे यार ये मेरे नोट्स तो बहुत बेकार से हैं, मुझे ये वाले नोट्स करने चाहिए. अब आप उसको लिखने बैठ जाओगे, आप एक नई पोथे बनाओगे, आप एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हो. बट अगर आपने क्लैरिटी डेवलप की है किसी टॉपिक की, तो देन anything will not change. Okay, so suppose if you find some new content, you know that the basic idea is exactly the same. All I need to do is just pick out some of the pointers which are not in my content and just add it to my content. And आप अपने नोट को फिर expand कर सकते हो.
But if the notes are made without clarity, you will feel that all the notes are completely different. आप सारे notes को compile करने के चक्कर में बहुत time लगाओगे, एक voluminous book create कर दोगे जिसको दोबारा आपको revise करने ही नहीं होगा. So just understand that whenever you start a topic, the focus should be on the clarity or the understanding, and then a basic notes of that, and then expanding that note if you're finding any new content into it. Okay, so that should be the second thing. So rather than going with this or this, have one source or try to create one source. Okay, and that will happen only when you have understanding of a topic. And kitna depth mein jana hai, that should be checking through the PYQs. उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, कितनी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, क्या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं उस सवाल को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं उस एस्पेक्ट को एड्रेस कर पा रहा हूँ. And if the answer is yes, that means you have developed an understanding of that topic. Now some basic structure, that is enough. And अब कुछ भी करना होगा उस बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करता जाऊंगा, उसमें उस नोट्स को एक्सपैंड करता जाऊंगा. That is it. Okay, so that you should be doing rather than collecting बहुत सारे किताबें, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे PDFs और videos and all such kind of thing. Avoid it at any cost. Okay, then the next thing that you need to do is begin answer writing as early as possible. Okay, I usually give this idea that देखो, if you want to run or say if you want to win a race or a sprint, basically practice में आपको running ही करनी पड़ेगी. You cannot lift the dumbbells and just expect that you will be doing well on the ground in the race. ऐसा नहीं होगा. जिम में जाके डंबल उठाने से आप तेज दौड़ना नहीं शुरू करोगे. सो जिस एग्जाम में, जिस गेम में आपको पार्टिसिपेट करना है, यू हैव टू एक्सेल इन दैट. एंड हियर रिमेंबर, यूपीएससी इज ऑल अबाउट आर्टिकुलेशन. इट डजंट मैटर कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने नोट्स बनाए हैं, आप क्या हो, आपने क्या एफर्ट लगाया है. एवरीथिंग गोज टू द एग्जामिनर इन द शीट्स दैट यू हैव रिटन. ओके, उसको ये नहीं पता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी है, आपने कौन से कॉलेज से डिग्री ली है, आपने कितने नोट्स बनाए हैं, आपने कितने आंसर राइटिंग के, कुछ नहीं. ऑल दैट यू आर राइटिंग on the sheets of the mains answer sheet will actually determine your fate, and that all depends upon your articulation. But हम क्या करते हैं कि articulation पे ज्यादा काम नहीं करते हैं, हम रीडिंग पे ज्यादा काम करते हैं, याद कर लेते हैं, कंटेंट डेवलप करते हैं. लेकिन अल्टीमेटली वो कंटेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जो आपके मार्क्स डिसाइड करेगा, जो आपके फेट को डिसाइड करेगा, उसको हम लास्ट टाइम के लिए पोस्टपोन करते हैं कि एक बार याद होगा तो लिख तो लेंगे ही. ओके, दैट इज व्हाट वी कंसिडर. बट नो, articulation is equally important, or in fact I would say more important than merely developing the content or having the content. And that's why from the very first month itself you should start answer writing. Okay, and in fact the plan should be like this. Suppose if you're reading a topic in GS, any topic, आपने पॉलिटी से शुरू किया and you started with say fundamental rights, let's say, या फिर आपने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू किया. तो प्रियम्बल का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है कि सपोज इफ यू आर टेकिंग ए टॉपिक, जस्ट सी कि प्रीलिम्स के लास्ट 10 इयर्स में क्या सवाल पूछे गए. सो दैट विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग दैट इतने डायमेंशंस मेरे को प्रियम्बल के पता होने चाहिए, सो दैट आई शुड बी एबल टू आंसर ऑल द प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. एट द सेम टाइम you should also keep in mind the questions that have been asked in last 10 years mains mein. Okay, and that will give you the understanding of how much depth you should cover this topic, whether you are able to answer it, whether you are able to address it. And then at the same time you should start practicing it, because answer writing is more like an art. हो सकता है कि कंटेंट बहुत लोगों को बहुत कुछ पता हो, लेकिन किस तरीके से बता रहे हो, कितने फ्लो है, कितना स्ट्रक्चर है, कितनी मल्टी डिमेंशनैलिटी है, कितना इंटरलिंकेजेस है, that you will not develop in a single day. Just by having the content doesn't mean that you will be able to write it all, you will be able to express it clearly. You will have to develop this like an art. जैसे कि सिंपली आप समझो कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने जाते हो, तो पहली बार आप सारे गामा या सरगम सीखते हो या हारमोनियम बजा रहे हो या कुछ भी बजा रहे हो, तो आप पहली बार सारे गामा पा बजाते हो. जब कोई एक नोवाइस सारेगामा पा के नोट्स बजा रहा है तो समझ में आएगा कि कोई एक नोवाइस है,
ट्यून सेम निकल रही है, लेकिन वही जब कोई एक्सपर्ट उस हारमोनियम को बजा रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है, वो सिंपल नोट्स को भी इस तरीके से बताएगा जैसे लग रहा है कि कोई एक्सपर्ट, कोई जिस बंदे की एकदम पकड़ है, वो उस तरीके से बता रहा है. Now, only thing is that they are writing the same idea, they are expressing the same idea, but the way of articulation is very much different. Okay, and that is showing that कि एक आदमी शायद अभी novice है, अभी नया नया आया है, and the other one has been doing it for a long period of time. That means he has developed some kind of excellence in his art, and that is with practice only it will come. So that's why you should develop an excellence in articulation, and you should be doing it from the very first day itself. आपके पहले answers बहुत खराब होंगे, but over a period of time you will have very good, great answers that will show the clarity of thought, that will show the depth, that will show your understanding also, and that will also help you in time management. Okay, so that's why you should always be writing answers from the very first day. Don't wait कि syllabus खत्म हो जाए या GS खत्म हो जाएगा, then I'll start answer writing. No, start from the very first day itself. In fact, second phase say you should be writing 4 to 5 answers daily. 2-3 answers for GS and 2-3 answers for optional. आपको daily लिखना चाहिए. Okay, and that is आपकी writing practice बढ़ेगी, आपका muscle memory develop हो रही है, and the flow, the articulation will automatically improvise. Okay, so that's why you should start answer writing from the very first day itself. Okay, the next thing that we need to take into account is the plan for revision. Okay, now without this plan for revision or revision architecture, आप एक गो में खत्म करते जा रहे हो. Most of the people you might feel कि जो आगे पढ़ता जा रहा हूं पुराना वाला भूलता जा रहा हूं, and जिसकी वजह से we might not be able to move ahead. But the thing is, if you tell yourself that okay, this is for the first time I'm covering a particular topic, now I will do a revision maybe sometimes later, and that will give your brain some kind of a sense of relief कि कोई बात नहीं, even if I am forgetting, even if I am not able to recall, remember everything, I will revise it sometimes later and eventually मेरा काम हो जाएगा. I will not forget everything. कल मुझे मेंस नहीं देना, कल मुझे प्री नहीं देना. I have enough time for revision. Okay, and that will come only when you have a proper architecture or say maybe a proper schedule that इतने से इतने महीने तक I will cover the syllabus, and उसके beyond I will be trying to revise it. Okay, so how? So basically remember there is 4R strategy for your UPSC preparation. What is that? It is read, reduce. So first read a topic, then reduce means आपने 10 पेज पढ़ा है, 20 पेज पढ़ा है कहीं किताब से, आपने उसको नोट बनाया अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पेज में, उसको 300-400-500 वर्ड का कंटेंट एक जगह पे ला दिया. रिड्यूस, एंड रिड्यूस में भी 2 फेज हो सकता है. एक आपने बड़े नोट्स बनाए एंड देन लेटर ऑन यू कैन गो फॉर short notes, maybe mind maps, maybe some flow charts, something like that. So that is the second R. The third one is the R for reproduction. Reproduce. Whether you are able to recall it, whether you are able to write it down, so आपने उसको वो चेक कर लिया. आप प्री का है तो आपने कोई मॉक टेस्ट दिए, मेंस का है तो then you can be doing for answer writing. So that is the third step. Okay, and then the fourth step comes to be revision. So you have the notes, you have the PYQs, the answers that you have written, revise it 2 to 3 times minimum before you are ready for exam. Okay, and that is the 4R strategy: read, reduce, reproduce, and then revise. Okay, and that is you should always have in mind कि मेरे को revision करते रहना है. Without revision, what will happen that your effort will go wasted. You will not be able to recall, you will not be able to remember anything that you have done in that period of time. So देखो आपका जो 12th to 15th month hoga, that is the last 3 to 4 months, that should all be about consolidation, that should all be about revision. Okay, and that is what you need to do. That is smart revision and the 4R strategy that you should follow. Okay, so just I want to conclude by saying that
कि first build the base, first build the understanding, and that is you will develop this base or understanding by starting with GS. Then go for depth, and that you will develop it basically through optional, and then integrate both of them, revise it accordingly, write as much answers as possible, and then you are ready for your mains. Remember, optional is your rank differentiator, but GS is your qualifier. ऑप्शनल आपको रैंक इम्प्रोवाइजेशन में या रैंक अटेन करने में हेल्प करेगा, बट बिना जीएस के अंडरस्टैंडिंग के आप शायद क्वालिफाई ही ना कर पाओ. सो यू फर्स्ट नीड टू हैव एन एक्सपर्टीज और सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएस before you jump into the depth of your option. Okay, and that's why you should always start with your GS, and after some point of time when you have developed a flow, start with your optional and manage both of them together, and focus on writing more rather than simply reading. Make notes, make short notes, write answers daily, and then revise regularly. So this is something that I wanted to share with you, and now I'm open to any of the questions that you want to ask. So please, if you have any questions, feel free to ask. And please make sure that you're not asking only questions related to anthropology. In general, you can ask any questions. How can we gauge the quality of the answers? Okay. So कुछ basic चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, that whether your answer has a structure. Simple चीजें कि does your answer has a structure, means intro, body, conclusion. Second is the brevity of the answers. Brevity means whether the answer is basically to the point, whether it addresses the demand of the question or not. If the answer is addressing the demand of the question plus it has an intro, body, conclusion type of structure. The third thing that you should be taking into account in GS answer specifically is the multidimensionality. कि ये एक होलिस्टिक आंसर है क्योंकि जनरल स्टडीज से रिलेटेड है, सो इट शुड बी होलिस्टिक इन नेचर. ओके, so whether it is multidimensional, it covers multiple dimensions or not. If you are ticking on these three aspects while making an answer, your answer will always be very good. Have a structure, intro, body, conclusion. Try to make sure that the answer is to the point, not beating around the bush. Beating around the bush नहीं, demand of the question को directly address कर रहा है, बार बार उसको reiterate कर रहा है कि देखो ये आपने ये पूछा था, इसके लिए 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, इस तरीके से it is always trying to hit the demand. And finally, it should be covering multiple dimensions, and that is how a good answer is. Okay. My attempt is 2029. So how can I prepare? अभी तो यार आप एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालो. अभी तो बहुत टाइम है, बिकॉज nobody knows कि 2029 में क्या पैटर्न होगा, कुछ चेंज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा. So don't start so early. Just develop the habit of reading newspaper. Develop say reading of NCERTs वगैरह, थोड़ा सा basic understanding लो, and make a planned attempt or say तैयारी from 2027. Okay, this year is not right for you. In anthropology, what is the minimum time one should give to complete it? 5 months to minimum लगते हैं. If you are giving like 5 to 6 hours a day, minimum 5 months is required. Please share essay strategy. Okay. Now in case of essay, okay, आप जहाँ पे भी classes करेंगे वो सब आपको कुछ बताएंगे, but there is one simple strategy that I would try to elaborate. It is that, देखो, essay में what is required? You are supposed to write a detailed understanding of a topic around 1000 to 1500 words में आपको लिखना होता है. Now, if you see, there are some limited themes जिसके ऊपर आपकी detailed understanding पूछी जा सकती है, and that limited theme you can understand from last 4 to 5 years of essay. Okay, आप 4 से 5 साल का essay का पेपर ले लो, and you will find that कि there is around हर साल 8 सवाल हैं, 2 सेक्शन में, टोटल 4 each. So 5 years, it comes out to be 40 topics. Now what you have to do with this 40 topics, just develop some understanding on these 40 topics. ये कहना क्या चाह रहा है, theme क्या क्या है, and based on these 40 themes, just develop some good intro and conclusion for these 40 themes.
How? Basically, you can use ChatGPT, you can use Gemini or something like that. Give it a prompt that this is the topic, I have to write an essay. Give an intro and conclusion for this particular topic in the form of a story. The intro should be connected to the conclusion. The story should have some kind of a linkage with the conclusion. Okay. And based on that, you will develop some intros and conclusion. So आपके ये जो 40-50 intro conclusion है, आप इसको एक डायरी में लिख लो. And try to remember it as much as possible, at least the crux of it. Now, when you have the intro and conclusion, that means आपको ये themes के बारे में उसको begin कैसे करना है, उसको end कैसे करना है, आपके पास एक already prepared content है. Okay, now whenever you are attempting any paper essay का, and you can choose the topic जिसके intro conclusion अपने पास तैयार हो, आपका आधे से ज्यादा burden खत्म हो गया. Second thing that you can do, once you take a particular topic, okay, अब आपके पास intro conclusion already ready है. All you have to develop is a body. The body is nothing but all the GS subjects that you have read. Okay. अब आप GS में सोचो कि इस टॉपिक पे कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कुछ लिखा जा सकता है, या कुछ सोशल लेवल पे कुछ लिखा जा सकता है, सोसाइटल लेवल पे कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इन सब बेसिस पे, एज, इन सब बेसिस पे, क्लास, इन सब बेसिस पे कुछ अगर टॉप कुछ पॉइंटर्स बना सकते हैं, या फिर कुछ ज्योग्राफिकल लेवल पे, या फिर कुछ पॉलिटिकल लेवल पे, या फिर गवर्नेंस या लीगल एस्पेक्ट्स पे, या सोशल जस्टिस लेवल पे, या फिर इकोनॉमिक लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, या फिर एनवायरमेंटल लेवल पे, और या फिर एथिकल या मॉरल लेवल पे, anything can be written. Now you are getting these dimensions. In dimensions में सोचोगे and you will develop some pointers. So you have intros, you have conclusion. Now these are the pointers you should be thinking about a particular topic, and the essay is ready. So इतना ही effort करना है. Okay, that is what you should be. But that will come only once you have a decent understanding of GS. So you should be doing this maybe after you have gone for one reading of entire GS, ताकि आपको सारे subjects की basic understanding है, and then you should go for essay preparation in this particular manner. Can you please provide month-wise ideal roadmap so that we can try to cover? It will help us like a guide. Okay, I told you कि पहले 4 महीने में you should go for GS only, and in this GS only you should try to cover the big 4 पहले 4 महीने, and that will take 1 month each. Big 4 कौन से? You can either start with polity or modern India. So आपने polity से शुरू किया, then you can go for modern India, then you can go for geography, and then you can go for economics. This is the big 4, the first 4 months. Then the next 6 months you have to cover each and everything. So then the next important topics, you can go with ethics, ये हो गया, and then you can start with Indian society. Then you can start with science and tech and environment. Then छोटे topics, social justice, IR, governance, and so on and so forth. And this is the phase where you should be completing the GS also. And parallelly, आपको 50% time should be going towards your optional, ये 6 महीने के. Okay? And then the next 11 or say 12 to 15 months, last 3-4 months, revision plus answer writing. That should be your plan overall. How to approach PYQs before or after covering a particular topic, both for pre and mains. See, आपको कोई भी टॉपिक अगर आप एक बार पढ़ रहे हो तो आप या तो PYQs पहले देख लो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन करस्पॉन्डिंगली डिसाइड कि ये टॉपिक में इतने डेप्थ तक जाना है. अदर वे ऑल्सो इज पॉसिबल. यू रीड अ पर्टिकुलर टॉपिक, डेवलप एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड देन सी द PYQs. आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है, अब आपको उस टॉपिक को और कितना डेप्थ में एक्सप्लोर करना है, दैट यू विल गेट बाय सीइंग द PYQs. बट एनीथिंग दैट मीन्स, देखो सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कि पहले PYQ देखे या टॉपिक बाद में देखे, या फिर पहले टॉपिक देखे बाद में PYQ देखे. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज
उस टॉपिक को कितने डेप्थ तक लेके जाना है, एंड दैट यू विल डेवलप so by exploring the PYQ along with reading that topic. So just I would suggest कि just to make it simple for you, just read the topic, एक basic understanding ले लो, and then read the PYQs. You will get an understanding कि कितनी depth में लेके जाना है उस topic को, and correspondingly then you can decide कि कितनी level तक आपको और read करना पड़ेगा या क्या क्या content और आपको अपने notes में add करना हो. Okay. I was answer student in LevelUp IAS. I took classes, revised, wrote test, completed the course, but when I started second round of revision, post completion of I'm facing friction while starting theories, due to which I'm delaying the revision. देखो यार, theories ऐसा है कि आपको कई बार थोड़ा सा friction आ सकता है, आपको लगेगा कि चीजें भूल रहा हूँ. Wherever you feel any kind of doubt, I have shared my number. Just send me the message. I'll just clear your doubt. आपको जो भी doubt आएगा, I'll share the voice note, and eventually you can move ahead. I have read some of the subject of UPSC at least one time, so I should start answer writing or नहीं नहीं, आंसर राइटिंग तो पहले टॉपिक वाइज आप देखो, आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत पोस्टपोन करो. एनी टॉपिक दैट यू हैव रिटन और से हैव यू रेड, सी उस पर्टिकुलर टॉपिक से मेंस में क्या सवाल आया है, क्या मैं उसका आंसर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, आप लिखने की कोशिश करो. ट्राई टू आर्टिकुलेट, डोंट वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस टू स्टार्ट आंसर राइटिंग. इज इट पॉसिबल दैट पॉपुलर ऑप्शंस माइट बी पनिश्ड इन द फ्यूचर? यार ये तो एस्ट्रोलॉजी वाली बात हो जाएगी कि मुझे कैसे पता होगा कि पनिश किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे मुझे, और ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता मुझे नहीं पता. ओके, सो नोबडी नोज एक्चुअली. अब सबके सब अगर वही ऑप्शन ले रहे हैं, से आउट ऑफ 13,000 पीपल हु आर अपियरिंग फॉर मेंस, यू विल फाइंड दैट 12,000 people are just juggling in these 4 or 5 options only. Okay, that is anthro, socio, geography, PSIR, history, PABAD, and so on so forth. Okay, बाकी बाकी 1000 1500 ही बाकी ऑप्शन लेते हैं, तो ये 5-6 ऑप्शन में ही पब्लिक जाएगी. या आप आंथ्रो से थोड़ा सोशो में शिफ्ट हो जाएगा या सोशो से थोड़ा आंथ्रो में शिफ्ट हो जाएगा, बट इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं. तो अगर इस सारे के सारे ऑप्शन को पनिश करेंगे तो अल्टीमेटली रिवॉर्ड किसे करेंगे? ओके, एंड अगर सारे के सारे ऑप्शन पनिश हो रहे हैं तो अल्टीमेटली योर जीएस विल बिकम द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. सो नोबडी एक्चुअली नोज कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. How to evaluate our answers? We have discussed this in, I think I have taken this question in the beginning. While we are studying GS or optional, how should one revise periodically while completing the syllabus? See, what you can do is, either you can complete the syllabus at a stretch and then go for the revision, or if you are feeling that कि एक बार खत्म कर लिया तो उसके बाद बहुत टाइम बाद रिवाइज किया तो पूरा भूल जाऊंगा, तो you can keep a day for the week for revision. So say for every Sunday, you can revise whatever you have read in the entire week. And say for every last Sunday, you should try to revise say मतलब जो पूरे मंथ में आपने कवर करने की कोशिश की है, जैसे एक ग्लांस मारना कि वो टॉपिक से एक बार रिवाइज कर, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना बैठ के, बस एक ग्लांस मारना. कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये टॉपिक दोबारा देख लेता हूँ, तो आप देख लो, क्योंकि आपने हर वीक में एक रिवीजन किया है. And then last Sunday ko you can go for entire month ka revision. Okay, and that can be done. Anthropology sources, please. So this is not about anthropology. I'll take some other webinar for it. अभी तो यहाँ पे I'm discussing कि GS और optional को एक साथ coordinate कैसे करें. So anything related to that I'll be answering. I was part of Anthro 2.0 batch which ended. So my attempt is first attempt to combine करके ही करे GS. Yes, definitely GS और optional को देखो, आप किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो ओवरवेलम हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे बहुत जल्दी. सो इसीलिए थोड़ा सा मतलब मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए दो सब्जेक्ट को मिनिमम साथ में लेके चलना चाहिए. Anthropology strategy for repeaters who have completed the syllabus once. Write as much as possible. जितने PYQs हो सकते हैं लिखो, एक बार लिख लिया दोबारा लिखो. Okay, and that is the best thing that you can do with any of the optional. How can we manage the revision of subjects that were completed along with the current GS and optional classes? वही आपको बताया कि every Sunday you can keep it for your revision. Okay, and then every last Sunday you can revise whatever you have read in the say entire month. अब उसके बाद भी अब आपने पिछले महीने कुछ पढ़ा है, अब आपको हर महीने रिवाइज करने की जरूरत नहीं. एक बार एक स्ट्रेच में सिलेबस खत्म हो जाए, देन यू कैन गो फॉर ए कंप्लीट रिवीजन अगेन.
if someone has completed the syllabus but prelims is a roadblock, then doing 20-30 year prelim PYQ in 1 month and making notes out of it, it is a good strategy. Definitely yes, PYQs will give you that confidence, और इसी के बहाने आप बहुत सारे और dimensions को भी explore कर पाओगे that you usually don't do while reading a standard book or maybe your coaching notes. So PYQs के through that you will get that idea also. I'm getting feeling of FOMO in both GS and Anthro, although I do things whatever UPSC needs, especially after seeing mock marks etc. ये देखो यार, ये फोमो वाला जो केस होता है ना, आप गलत संगत में बैठे हो. यू आर मे बी यू आर एक्सप्लोरिंग द सोशल मीडिया सो मच. आप रेडिट बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब बहुत ज्यादा देख रहे हो, आप कोचिंग के वीडियोस बहुत ज्यादा देख रहे हो. सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू एक्चुअली आर लैकिंग. It's only because you are exposed to the wrong content. Okay. So in order to solve that FOMO wala case, you should have a checklist. अगर आप वो कर रहे हो, तो then you should not feel FOMO at all. And what is that checklist? First is syllabus complete है कि नहीं, मतलब जो भी syllabus है वो complete है कि नहीं. PYQs लिखा है कि नहीं लिखा है, if this is the case. And third, am I good in time management or not? That is, गिवन टाइम में आंसर लिख सकता हूं, टेस्ट 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है या 3.25 घंटे में कंप्लीट हो रहा है या नहीं. इफ द आंसर इज यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. डोंट फॉल फॉर एनी ऑफ द फोमो. syllabus, PYQ and the time management, these are the 3 steps that you need to ensure in order to qualify the exam. Okay, so अपने exposure को लिमिट करो. रेडिट बहुत ज्यादा मत पढ़ो, बहुत लोगों से अपनी वैलिडेशन मत लिखो कि यार मैंने ये किया है, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना ज्ञान है. So don't try to get validation from everyone. You will never be validated positively by each and everyone. Okay. When will Anthropology Foundation for 2027 begin? April end में. During prelims phase, how long should we continue optional preparation? देखो, लास्ट 3 महीने तो आपके solely prelims के लिए होने चाहिए. उससे पहले you should be giving 60-40% time duration to GS and optional respectively. Taking too much time to write answer, like for a 10 marker it is taking 13-14 minutes and I am overshooting the word limit also. See, ये जो टाइम लिमिट वाली बात है कि शुरुआत में इट इज टेकिंग लाइक 10-15 मिनट्स टू राइट एन आंसर, दैट यू शुड नॉट बॉदर एट ऑल. रीजन क्या है, व्हाई वी आर डूइंग द आंसर राइटिंग? आप अंडरस्टैंड करो उसका पर्पस क्या है. आप मेंस में टाइम बाउंड मैनर में लिख सको, इसीलिए आप पहले से ही लिख के जा रहे हो. तो सपोज इफ आई हैव रिटन एन आंसर ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक and in the first attempt it took me 13 minutes or 14 minutes, it's absolutely okay. The thing is कि अगर सिमिलर टॉपिक का आंसर, सिमिलर टॉपिक पे क्वेश्चन मुझे मेंस में मिला या किसी मॉक टेस्ट में मिला, तो I'll have some basic structure, I will have some blueprint in my mind, and then definitely automatically जो पहली बार लिखने में 13-14 मिनट या 20 मिनट भी लगा, तो दूसरी बार ऑटोमेटिकली वो 10 मिनट में हो जाएगा. एंड मे बी द थर्ड टाइम व्हेन आई विल बी राइटिंग इन द मेंस आफ्टर द टेस्ट सीरीज, it will be in 7 to 8 minutes. It's easily possible. Okay. अब लेकिन आप सोचो कि मेंस में पहली बार आप आंसर लिख रहे हो, आपने पहले कभी बनाया नहीं, कुछ किया ही नहीं उसके ऊपर, तो जितना टाइम आपको पहली बार लिखने में लग रहा है वो आपको मेंस में लगेगा. And that is why I am suggesting you to write answers as much as possible, so that in mains you should find 70 to 80% of the questions repeated, at least on the same theme that you have already written the answers. So आपको टाइम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको मेक श्योर करना है कि मैंने इतने टॉपिक पे आंसर लिख लिया है कि ऑलमोस्ट कोई नए थीम आने की पॉसिबिलिटी मेंस में कम हो जाती है. और एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द थीम्स शुड बी समथिंग दैट ऑलरेडी हैव ब्लूप्रिंट ऑफ इट. ओके, तो दूसरी बार आप उसी टॉपिक पे आंसर लिखोगे या उसी थीम पे लिखोगे, विल नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम. व्हेन टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज? सो से टेस्ट सीरीज फर्स्ट 2 फेजेस में तो नहीं होनी चाहिए. पहले 2 फेजेस में आपको PYQs और रेगुलर आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करनी चाहिए. बट वंस यू हैव फिनिश द सिलेबस, आपने एक रिवीजन कर लिया है, नोट्स कंसोलिडेट हो गए, देन यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज. देखो, टेस्ट सीरीज का पर्पस टाइम मैनेजमेंट है. इट इज नॉट हेल्पिंग यू इन डेवलपिंग द आंसर राइटिंग स्किल. आपने आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कर ली है बाय डूइंग द आंसर राइटिंग रेगुलरली डेली बेसिस पे. देन नाउ यू नीड टू गो फॉर 3 घंटे में कैसे लिखना है, क्वेश्चन कौन से चूज कर रहे हैं, किस ऑर्डर में लिखना है, उसके लिए टेस्ट सीरीज है. तो बट once you reach that stage, only then you should go for test series. Suggest some sources for validation in anthro. I've told you कि ये anthro से related नहीं है session, तो I'll take up anthro वाला बाद में. Can we write in points format for optionals also? Definitely, ये depend करता है topic to topic. जैसे कि
कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे इट माइट रिक्वायर सम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे स्मॉल पैराग्राफ्स विल बी अप्रिशिएटेड रादर देन राइटिंग इन द पॉइंट्स। बट इन केस ऑफ आंसर जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे आंसर राइटिंग इन पॉइंट्स विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड बिकॉज दे आर रिलेटिवली फैक्चुअल एंड दे आर मल्टी डिमेंशनल। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं सोशो कल्चरल थियरीज एंड ऑल वेर इन सम डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, तो वहां पे आप पॉइंट वाइज आप आंसर को बहुत मैकेनिकल बना देते हो। सो राइटिंग इन स्मॉल पैराग्राफ्स, कंटेक्स्ट बिल्ड करना, थोड़ा बैकग्राउंड देना, दैट विल डेफिनेटली बी अप्रिशिएटेड। ओके, when to start optionals for beginners? 27 attempters. So around जून जुलाई आपको शुरू करना चाहिए। अगर आप अभी से जीएस की शुरुआत कर रहे हो तो जून जुलाई इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विथ योर ऑप्शनल। Okay, I think I have taken almost every question. So that's a small suggestion from my side. And if you have any other questions, you can put it on the Level Up group. I'll try to answer it as much as possible. So that's it from my side. Thank you so much. All the very best.